नमस्कार। इमरान प्रतापगढ़ी का एक शेर है कि मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो नहीं हूँ, जितनी मेरी बिसात है, काम आ रहा हूँ मैं। ये शेर आज के इस अंक के पहले मैंने इसलिए पढ़ा है कि ये जो एक विशेष आयोजन, जो विशेष शो हमने डिज़ाइन किया है, ये उनके श्रद्धा में किया है, जिन्होंने अपनी छोटी-छोटी कामों को इकट्ठा करते हुए इतना बड़ा काम कर दिया गया कि उन्हें वर्ल्ड ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड के लिए चयनित किया गया। जी, मैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर आज, और इस अंक के ज़रिए हम लोग उन लोगों से मिलेंगे जिन्हें क्रेडेंट टीवी द्वारा इस वर्ष वर्ल्ड ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड के लिए चयनित किया गया। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग किस तरह से इस तरह काम कर रहे हैं और कैसे समाज में बदलाव लेकर आ रहे हैं, और किस तरह से इनकी जो सेवाएं हैं वो जन कल्याणकारी हो रही हैं, लोक कल्याणकारी हो रही हैं और लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं। तो इस विशेष पेशकश में आज जो पहली अतिथि हैं और WHPA की जो पहली विनर हैं, जिनसे आज हम आपको रूबरू करवाएंगे, मिलवाएंगे, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बेजुबानों की जबान बनने का काम किया। अक्सर किसी बात को समझाना होता है तो जबान का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी होता है, तभी आप आसानी से बातों को समझ पाते हैं। लेकिन वो जिनकी जबान नहीं हो, वो कैसे आपको अपनी बातें बताएं, कैसे अपना दर्द बताएं। लेकिन जिसने जिद ठान ली हो कि जो बेजुबान है, मैं उसका भी दर्द समझूंगी और उसका भी निवारण करूंगी और उसे भी एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करूंगी, तो उसका नाम बनता है इंद्रानी दास। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज की पहली विनर का, और उनके जीवन की कुछ झलकियां देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उन्होंने कैसे ये सारा किया। नमस्कार इंद्रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत बधाई है कि आपको इस वर्ष के लिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड के लिए चयनित किया गया। और आपने जो सेवाएं दी हैं, जो एनिमल हीलिंग के क्षेत्र के अंदर जो अद्भुत कार्य किया है, उसके लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जुबान जिनकी है उनके दर्द को फिर भी समझना आसान हो जाता है, लेकिन आपने इतना मुश्किल रास्ता चुना जिसके अंदर जाना बड़ा मुश्किल सा था, और उनकी बेजुबानों की ज़बान को समझना, उनके दर्द को जो समझना, मुझे लगता है कि बहुत पेचीदा काम था, लेकिन आपने ना केवल इसको समझा और इतना अच्छे ढंग से किया कि देश और विदेश के अंदर भी आपकी चर्चा हो रही है, और इसलिए आपको इस अवार्ड के लिए भी नामित किया गया है। दर्शकों, मैं इंद्रानी दास जी के बारे में कुछ बताने की आज्ञा चाहूँगा। इंद्रानी दास जी जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, वे ऑफ आर्टमीज के फाउंडर हैं। ये एक एनिमल कम्युनिकेटर हैं, एनिमल रेकी टीचर और एनर्जी हीलर हैं। इन्होंने करीब 12 साल से अधिक का जो वक्त है वो एनिमल रेकी की बात करें, एनर्जी हीलिंग की बात करें, उसके लिए लगा दिया। ये सर्टिफाइड टीचर हैं इन लेट एनिमल्स एंड लेट मेथड ऑफ एनिमल रेकी की, और प्रैक्टिशनर एंड द टीचर एट द शेल्टर एनिमल रेकी एसोसिएशन SARA जुड़ी हुई है। साथ ही साथ प्रैक्टिशनर ने पेरुवियन शमनिज्म की। इंद्रानी जी की बहुत सारी खासियतों के अलावा एक जो बड़ी खासियत मुझे नजर आती है, इनके साथ मुझे शो करने का पहले भी सौभाग्य मिला है। उस वक्त जो एक बात से बेहद प्रभावित हुआ था, वो इसी बात से प्रभावित हुआ था कि इन्हें वो चीजें जो जुबान नहीं है, जो अपनी बातें कर नहीं पा रहे हैं, उनको भी समझने की इतनी जबरदस्त जिद पैदा हुई। उनके दर्द को न केवल आत्मसात किया, बल्कि इन्होंने उनके दर्द को हरने की भी कोशिश की। तो चलिए, मुझे लगता है कि अब आपके बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इतनी दया, इतनी करुणा, इतना प्रेम कहीं आपके मन के अंदर आया कैसे, कैसे आपने ये क्षेत्र चुना। तो हमें अपने थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताइए, किस तरह से सारी परवरिश रही, कैसे आपकी ये सफर शुरुआत हुई। नमस्ते। मेरा हिंदी अभी भी थोड़ा टूटा फूटा है, बहुत ज़्यादा ही टूटा फूटा है। तो आई वुड लाइक टू एक्चुअली रिक्वेस्ट योर परमिशन टू एक्सप्रेस मोर इन बिल्कुल, आप इंग्लिश। अंग्रेजी में बोलें, आप हिंदी में बोलें, क्योंकि भाषा से अधिक भाव का महत्व होता है, और भाव आपके इतने पुनीत हैं, पवित्र हैं कि उन्हें बार बार प्रणाम करने को मन चाहता है। तो आप जिस भाषा का भी प्रयोग करें, आप जिस लैंग्वेज में अच्छे से कंफर्टेबल हो, आपको हिंदी लगे तो हिंदी और अंग्रेजी लगे तो अंग्रेजी। जी ठीक, धन्यवाद। और मेरे बारे में बताने से पहले मैं शायद दो चीज़ आई वांटेड टू टॉक अबाउट। आपने बताया कि वो बेजुबान से बात करना है, तो in my experience, I will say that bezuban doesn't really apply. If you're talking to a cat or a dog, they have a lot to say. Maybe they are not talking in English, maybe they're not talking in Hindi, but they have a lot to say, and sometimes it can be very
humorous also. It's not always, very serious stuff that I am sick and help me and all that. Sometimes it's like, it can be very, very humorous. There was this cat who would talk about how he felt about the dog in the house, and it was, sometimes they can make you laugh as well. So बेजुबान तो है नहीं और चलिए मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, यानी मैं इस तरह से कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उनकी ज़बान हम समझ नहीं पा रहे हों, तो एक ऐसे हाँ, जीव की सहायता करना जिसकी ज़बान भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, और उसको आपने ना केवल सीखा और समझा और उनकी तकलीफ को हरने की कोशिश की। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। जी। और दूसरी बात है कि ये जो मैं कर रही हूँ, इसमें मतलब इट कम्स नेचुरली, इसमें दया एंड ऑल दैट मन में नहीं आता है. So I don't think that, I have to be kind and I have to be this. It is such a joy to work with the animals, cats and dogs, that once you start working with them and once you experience the joy, then there is like no looking back. It's just, most people who work with animals will say that, we just want to work with the animals. Give me more cats, give me more dogs. So it's a path filled with joy more than anything else. And more than what we give, I think we receive back from them. So that. अच्छा, अब मैं थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, किस तरह से फैमिली बैकग्राउंड रहा, उसके बारे में थोड़ी सी बताइए हमें। Family background. So my friends, whenever they talk about my family, they always refer to my cats. So I will start with them. So right now I have 2 cats. One of them is actually sitting right in front of me and listening to all of this. And so I have 2 cats right now. And my journey in this path started with the cat named Artemis, which is how the name Way of Artemis came. And this was way back in 2010. 2010, I lost Artemis, and it was not something which was very planned, something I knew beforehand. It was very sudden. And Artemis had a sibling, Amadeus. Amadeus and Artemis, they were very close to each other. And after the loss of Artemis, Amadeus went into this state of grief. He stopped eating, he stopped drinking, and the conventional medicines that we have, the veterinary treatment and all, there is not enough, I think, at this moment for emotions the way we have for humans. So in humans, when you have grief or when you have something emotional going on, there are people you can go to. We don't have that thing in the conventional medical world yet. I hope someday we will have. But when that happened, I did not have any answers. I did not know anything about Reiki back then. I just happened to see an ad in the newspaper about someone who does animal Reiki. So I reached out to her, and in one 30-minute session, after that, Amadeus went off to sleep. He slept for almost 24 hours. He slept through the day. And the next morning he woke up and he was back to normal. He was eating, drinking. It was like a miracle. So that is how I got interested, because in front of my eyes, I'm seeing something, I cannot say I don't believe anymore. Of course, I believe in it now. So I started exploring, and the same person became my first animal Reiki teacher as well. And that's how this journey started. And the name Way of Artemis has been stuck in my head since way back then, 2010. But it did take the pandemic to force me to really start something, because till then I was, I didn't have a formal practice. I had a full-time job, so I was managing the job and then doing this as, whenever time permitted. But 2020, animal Reiki, Way of Artemis, all of that started, and today here I am talking to you. जी, बड़ी बात कही, बिल्कुल सही बात है कि जब आपको लगा कि आप किसी का दर्द समझ सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उससे भाषा कहीं भी वो दीवार नहीं बनती है, वो एक ऐसा अवरोध नहीं बनती है कि जिससे आपको समस्या हो, तो फिर उस राह पे चल पड़े। कहीं न कहीं उससे आपको ज़्यादा पवित्रता और प्योरिटी महसूस हुई और उसके ज़रिए आपने इस रास्ते पे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, आप जो अब इतना लंबा जो सफ़र चला, और जैसे कि अभी आपने बिल्कुल वे ऑफ आर्टेमिस के ज़रिए तो करीब 3 साल से तो अद्भुत कार्य करना शुरू कर ही दिया है। मैं अगला सवाल जो भी जानना चाहूँगा, अब आपने आगे का फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जिनके ऊपर आप काम करना चाह रही हैं, कर रहे हैं? So फ्यूचर तो बहुत एक्साइटिंग है।
पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज एनिमल रेकी, and then I did a lot of work studying certification and all of that on animal reiki. Then I added animal communication, I added scalar wave healing and all of that to the offerings that I have. And today I've reached a stage when I have started offering, it just started, just less than a month now, I've started offering EFT tapping for animals. And this is where we talk about how EFT tapping can help with emotions. And it's the work that I've done so far, it's been very, very profound. And I'm very happy that I can now offer EFT tapping for animals. And going ahead, there are more stuff coming. So I also, I have a lot of courses out there, and I will also be expanding the courses. So helping people learn how to heal other animals, and that way we can reach and benefit much, much more. यानी हीलिंग के वो जो तरीके अभी इंसानों के लिए जो यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लेकर आए जाते हैं, उनके विभिन्न आयामों को आप धीरे धीरे करके इसके अंदर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एनर्जी हीलिंग की बात कर ली आपने, EFT की बात कर ली, और भी जो शैमनिक आप हीलिंग की बात करें, और भी चीजें हैं, उनको भी आप यहाँ पे शामिल करना चाह रही हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में कि आप इन चीजों को अच्छे से स्थापित कर पाएं, और जो जीव हैं, जो वही जिनकी भाषा हम समझ नहीं पा रहे, अब मैं बेजुबान नहीं कहूंगा, जिनकी भाषा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे जीवों के भी आप उनकी तकलीफों से निजात दिलवा पाएं। अच्छा, एक सवाल और मेरा जो मन के अंदर आता है कि आप भी इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, और भी लोग जो कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अगर हम बात करें एनिमल्स को लेकर, तो मेडिकल साइंस के जरिए उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है, और भी तरीकों से उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ से मैं आपसे जो जानना चाहूंगा वो ये कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो दूसरों से किस प्रकार अलग है, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब कि हाँ, ये स्पेशलाइज है हमारा और इस वजह से हमारा खास है, हम ये बेहतर कर पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि दूसरों के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकती, मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ। तो उसमें दो चीज़ है। एक है कि the first thing, I'm a very result oriented person. So for me, everything is about the result. So if someone comes to me and says that, my cat is unwell or my dog is unwell, and I do a session, if after that session the person sees, oh, nothing is really happening, why am I wasting my time and money, I will say, I'm sorry, but maybe this is not going to work for you. Touch wood, I have not encountered a case so far, but that is my approach. There has to be a result. There has to be a tangible result that the human can see. The human will be able to see a shift. Now, this is something also to remember, that sometimes we also work with animals who have reached end of life stage. So I cannot say that, if you come with me with the last stage of kidney disease, the animal will recover. That's not the point. But the point is there will be a shift. There will be maybe more energy, towards the end, that energy to live through the last days in comfort, is able to sleep well, is eating well, even though it's an end of life situation. So those kind of benefits you will be able to see. So that is one thing that I say. The other thing that I say is the work that I do is a combination of many different modalities which I've learned over the years. So I have animal Reiki, I have animal communication, shamanic healing, I have meridian touch healing, and of course EFT tapping. So there's a whole bunch of things out there. And when I start a session, I don't really know which one I will be using. It's only after I get in that it's an intuitive thing. So I know that, okay, this is the situation and this is what it has to be. So that's how it works. And that is the offering I have, that it's not just one thing, but there's a whole bunch of offering out there that you can choose from. अच्छा, एक बात ये भी आती है कि जैसे हम लोगों से बात करते हैं, उनसे कोई समस्याएं होती है, तो वो फिर भी कह के अपनी बातों कह पा रहे होते हैं, लेकिन जब हम लोग इमोशनली, आप जैसे भी आप जिक्र कर रही हैं कि एक मनुष्य होता है, एक आदमी होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो तकलीफ के साथ साथ भावनाएं बहुत ज्यादा जोड़ के रखता है, और एनिमल्स की इस बात से रियायत है कि वो उसके अंदर फीलिंग्स को बहुत ज्यादा नहीं जोड़ते। अगर उन्हें बॉडी के तौर के ऊपर अगर हेल्प मिल रही है, रिलैक्स मिल रहा है, तो वो उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के अंदर बॉडी के साथ साथ के अंदर माइंड को भी सपोर्ट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर एक जो सवाल जो मेरे मन के अंदर आ रहा है कि किस तरह की इमोशनल चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली कैट्स की बात करें, डॉग्स की बात जो करें, उनके साथ आप काम करती हैं तो आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं।
Actually, it's a good question, and I wanted to read a quote when to start with the जी जी answer. And this is जी a quote by a person named Henry Beston. He says, "We patronize animals for their incompleteness, for their tragic fate of having taken a form so far below ourselves. And therein we err, for the animal shall not be measured by man. In a world older and more complete than ours, they are more finished and complete, gifted with extensions of the senses we have lost or never attained, living by voices we shall never hear. They are not brethren, they are not underlings. They are other nations caught with ourselves in the net of life and time." So I think the short thing that I'm trying to say is that we look upon animals and we say, oh, such a cute pet or just a cat. But we look at them through two extremes. Either we say that, oh, just a cat, how can a cat have emotion? Or we look at it through another lens and we say, oh, black cat, maybe there is some paranormal activity going on, something, some superpower. But the black cat is just another cat, and the black cat has the same feelings as you and me and any other one, any other human. So they have emotions just as humans have. Some of the common scenarios that I come across is grief. They grieve very deeply, especially if they have lost someone. I've already told you the story of Amadeus, how he grieved. So there are a lot of cats and dogs who grieve when they lose someone. The second thing is fear. Fear is another very common thing. Animals are always in that, they come from that state where they have encountered in some form or the other some fear. Maybe there is a past trauma where they have been in a situation which has led to a lot of fear, and so we have to deal with them. Another very common example is when you have a new animal joining the family. So I have my cat and I have me, and maybe there are other humans, and then suddenly there is a new cat comes in. So the cat who has been there earlier is now feeling very insecure. What is happening? Will I still get food? So we have to deal with that fear as well. The other very common thing is anxiety. Anxiety comes in the form of separation anxiety. So if I'm a cat and my human is suddenly gone for days, this happens when the human travels. So I'm a cat and I don't see my human around. What happened? I mean, is she coming back? Is she not coming back? Am I going to be left alone? I don't know. So as a cat, I'm feeling very anxious. I don't know what's going to happen to me. So we deal with that as well. Now with anxiety, separation anxiety, especially animal communication is a huge benefit. So if the cat knows that the human is going to come back after 2 days, it kind of gives them an assurance that, okay, I know what is happening. So that the another thing is often people come and say that my dog is aggressive, my dog keeps barking, or my cat is being a bully. And when I talk to that cat or the dog, most often it turns out that expression of being overzealous or aggressive, as we sometimes call them, beneath that is a layer of fear or insecurity. Something has happened which has triggered their internal fear and insecurity, and they're expressing that in the form of aggression. And that is where energy healing is very beneficial, because we can actually address the underlying emotion. And that is how the shift happens. अच्छा, आपकी बातें सुनकर मुझे अयूब साहब का वो आयशा अयूब का शेर याद आ गया कि खुशी में यूं इजाफा कर लिया है, बहुत सा गम इकट्ठा कर लिया है। कि दूसरों की तकलीफों को देख कर हम किस तरह से उनके अंदर करते जाएं, और फिर वही उसी तरह हमारी खुशी बढ़ती जाती। जो जो हम दूसरों की तकलीफ को हटाने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं, जो जो हमारी खुशी बढ़ती चली जाती है। बहुत बड़ी बात है। और आपके साथ में हमारे से बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक तेजस्वामी गोस्वामी जी हैं, वो आपको बधाई और शुभकामना दे रही हैं। अंशुजा रमन जी हैं, वो भी आपको बहुत बहुत बधाई दे रही हैं और आपको कह रही हैं कि अद्भुत विद्वजन हैं आप, और अद्भुत मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए और सच्चे मानवों को हृदयंगम क्षेत्र से अभिनंदन और धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन, धन्यवाद दे रहे। एक माध्यम जी हैं, वो आपके साथ में कर रहे हैं। एक V4 न्यूज चैनल है, वो भी आपको बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं और इसी तरह से आगे भी करते चले ही जाएं। अच्छा, जब एनर्जी हीलिंग की हम लोग बात करते हैं और इमोशनल चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करते हैं,
है ना? तो ये इमोशनल चैलेंजेस जो है, अगर एनर्जी हीलिंग की हम लोग बात करें, किस तरह से और कैसे एनर्जी हीलिंग इमोशनल चैलेंजेस जो मैं एनिमल्स की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए उनमें हेल्प करता है? Good question. So, how does energy healing actually help? Maybe I'll start with another story. This was another client of mine. She had two dogs, and they were very closely knit, all three of them. Now, one dog was pretty senior, so her time came, and when her time came, she transitioned. Death is something even energy healing cannot bring back anyone from. But when this dog transitioned, both the human, that is the client that I was working with, and the other dog, they went into a deep state of grief. And similar story. So I started working with them. And when another thing is, when I do EFT, I also do a tapping on the human, because animals get affected by how we are feeling. So I did the tapping one round with the human and then with the other dog. I did about 2 sessions, but after the first session, the next morning, she messaged me and she says that this dog, the younger one, this dog has a routine that every morning when she wakes up, she will make this sound, which is not really a bark, but like a happy bark, a little small bark. And she has not been doing that for a long time. But that morning she woke up and she was again doing that small bark again. So that was such a happy moment for the dog as well as for the human, that suddenly there is this shift. They're coming back to life. So that is how energy healing can help. Now the theory part of it is like this: we have our physical stuff going on and we have our emotional stuff going on. When, let's say, I'll take me as an example, when I fall sick, let's say I have a cough or a cold, then my energy is also out of balance. Something will happen in my energy field, something will be out of balance. And that is how, as healers, we work with the subtle energies to bring the physical body back into a state of balance. And it is the same with emotions. So taking the example of grief once again, when I'm in a state of grief, then somewhere in my energy body also there is something which is gotten out of balance. If I use a chakra system as an example, then we have the chakras. Then it's quite possible that my heart chakra will be out of balance. And if I can, with all the energy work, if I can bring the heart chakra back into balance, it can help that being, human or animal, deal with that grief better. And in the other system, the TCM system, we have the meridians. So we work with so the grief is often associated with lung. If you work with the lung meridian, we can help bring that grief, help release that grief. So you find that relief. So energy healing, the thing about energy healing is that it works across all layers, physical, emotional, and it goes and addresses the root of the issue. And that, I believe, is the beauty of this work. जी, आपके लिए बधाई की है कि हमारे साथ वी फॉर यू न्यू चैनल जो उसके जुड़े हुए हैं, चैनल हेड है, वो जुड़े हुए हैं, रवि असलीवाल जी, और वो भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप इतना अच्छा करें। मृणाल जैन साहब हैं, वो भी आपको बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे बातें करते करते आपसे आ रहा है कि अक्सर हम लोग ये कहा जाता है कि एनिमल्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू ह्यूमन वो ज़्यादा अवेयर होते हैं किसी भी डेंजर को पहचानने के अंदर कि अभी खतरा आने वाला है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? So what has happened is, with the source, as evolution has progressed, humans, we have moved to our head. We analyze, we think, and that is our humans' superpower, you can say. So we can look at a situation, rationalize, analyze, and say, okay, if X is equal to Y and Y is equal to Z, then X is equal to Z. Animals don't do that, right? So for them, they're not in their head. Everything, that entire survival is in their gut. Everything is based on that sense. They sense danger. They can sense an earthquake. They can sense, if there is some natural disaster coming, they can sense that in their gut. And that is how they survive. It's just that, we have evolved in two different ways. We do X equal to Y equal to Z. They just go by what their gut says. So yes, because that sense, that instinct is so very strong, they can also tune into the energies much faster, and they respond to energy work very, very, very fast. प्रणाम करता हूँ। मुझे लगता है आपका ये मैसेज है हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, जो आगे जो सुनेंगे इस कार्यक्रम को, जो देखेंगे, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण
हो जाता है। दर्शकों देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात इंद्रानी जी ने हमारे साथ में रखी है कि एनिमल्स के अंदर वो शायद सेंसिटिविटी है वो कहीं ज़्यादा इसलिए होती है कि वो इंसान की तरह हर चीज़ के पीछे लॉजिक की बात करें, वो इफ एंड बट्स की बात करें, उसके पीछे नहीं पड़ता। वो उन चीज़ों को आत्मसात करने की कोशिश करता है जैसे कि वो महसूस कर रहा होता है। जबकि हम लोग होते हैं वो कहीं न कहीं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज या फिर अपना ईगो जिसे हम लोग कहते हैं वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो शायद वो सही डिसीजन लेने में चूक जाते हैं। लेकिन वो बिल्कुल प्योर होते हैं, नेचर के करीब रहते हैं, तो वो इस वजह से उन चीज़ों, खतरों, कहीं और जो चीज़ें हो रही उतार-चढ़ाव उनको ज़्यादा अच्छे से महसूस कर लेते हैं। और मुझे लगता है एक बात इंद्राणी जी ने शुरू में भी जो कही थी कि एनिमल्स अपने आप को जल्दी क्योर कर लेते हैं, जल्दी से अच्छे हो जाते हैं, जैसे भी सिचुएशन रहती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन, क्योंकि उनके अंदर ठीक होने का ईगो या अपेक्षा नहीं होती। उन्हें लगता है कि अगर मैं शरीर से दुरुस्त हूँ, अगर मैं पेनलेस महसूस कर रहा हूँ या बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे किसी से कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता है, वो आगे बढ़ना उनका मकसद होता है। तो ये जीवन में अगर हम भी अपने आप अपना लेते हैं, तो आप देखिए कि एक जो आम ज़िंदगी है, वो जो तकलीफ़ों से भरी हुई हम लोग महसूस करते हैं, वो उससे कितना आगे निकल जाते हैं। दूसरी बात मुझे लगता है इंद्राणी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात यहाँ पर जो रखी, उसका भी गौर किया जाना बेहद ज़रूरी है कि अपेक्षाएँ अक्सर जो हम लोग करते हैं वो उनसे भी बचना चाहिए। क्योंकि एनिमल्स हैं, वो हमसे अपेक्षाएँ ऐसी नहीं कर रहे होते कि आप ऐसा उनके लिए कुछ करेंगे, उन्हें बस लगता है कि हाँ, मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। यानी आप अक्सर ज़िम्मेदारियों की बात करने चूक जाते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, जबकि एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें, तो वो ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तरफ ज़्यादा रहते हैं, अधिकारों की बात कम करते हैं। तो ये बात अगर हम लोग सीख जाते हैं, तो शायद इंसानियत और ज़्यादा आसान हो जाती है। इंद्राणी जी, इतनी बहुत अच्छी बातें हमें बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। मैं बहुत सारे सवाल हैं, मुझे लग रहा है समय बड़ा ज़रा-सा बचा है, लेकिन फिर भी मैं अपने सवालों को आपसे लेने की ज़रूर इजाज़त चाहूँगा। अच्छा, आपने ईएफटी टैपिंग की जो बात की थी यहाँ पर, उसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए कि ईएफटी टैपिंग ह्यूमन्स की बात करते हैं, इंसानों की जब बात करते हैं, तो समझ में आती है। लेकिन एनिमल्स की जो बात करते हैं, तो फिर ये ईएफटी टैपिंग किस तरह से मदद करती है और कैसे हेल्पफुल होती है? So I think it's the same thing. We often say that, we have the chakras and we have our meridians, but the animals also have that. They have the same chakras that we have and the same meridians that we have. And EFT, it is emotional freedom technique, is it's based upon the TCM system where we look at the 12 meridians. So we look at them like 12 rivers running through our body. When the energy flows through these rivers and there is no obstacle, there is no obstruction, everything is smooth and the energy is strong, then that being, human or animal, is going to be healthy, physically as well as emotionally. But when this flow, there is either an obstacle or something has become weak, the chi, the ki, the life force has become weak, then the flow through the meridians also become weak. And then there will be illnesses, physical as well as emotional. And the thing about holistic healing here is that everything is connected. The physical and the emotional is all connected. So I'm again taking the example of the meridians. Each meridian is associated with an organ. So there will be, let's say, the lung meridian is associated with the lung, then you have the liver meridian, the kidney meridian, and each of these meridians, they are associated with an organ and associated with an element. So we look at the 5 elements. The lung, for example, is associated with the metal element. And each element in turn is associated with an emotion. So you have been talking about grief. So metal is the element for grief. So if you have an animal in grief, then you probably need to look at the state of the respiratory system. How strong is the lung? If you have an animal who's always very scared, constant state of fear, then you need to look at the kidneys. What is happening? So that comes from an imbalance in the water element. And in EFT, what we do is we tap along various points, and each of these points are points on the meridians, on the different meridians. And as we tap on those points, those emotions that are attached to that meridian becomes freed up. So the fear gets released or the grief gets released. And hence that name, emotional freedom technique. And as you have very rightly said that animals, they have that ability to move very fluidly and very fast through their emotions. They don't get stuck in it as much as we do because they don't analyze, again, as you have said so rightly. So yeah, so that's how EFT helps. जी। अच्छा, एक सवाल और भी आ रहा है कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर अगर कुत्तों की डॉग्स की बात करें, कैट्स की बात करें, तो आवारा डॉग्स, कैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। उनको जो एनर्जी हीलिंग है वो किस तरह से मदद कर सकता है? उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। It's a very, very, very important question. And
You don't have to be an energy healer to help the street cats and the street dogs. You just need to be kind. Just kind. Be kind. If you can take that cat or a dog to a doctor, or give him food, water, excellent, do that, because they may need medical treatment. But if you're not able to do that, sometimes it happens, you're just passing by and you see a cat or a dog out on the street. Use that power of kindness. Kindness is one of the most powerful state of mind. It's not just about being kind towards something. If you live in that state of kindness, your entire energy field will change. And cats and dogs, when they're near that kind of energy field, they will automatically relax. They will not see you as a threat anymore. And when they relax, their own healing abilities will automatically start. So all you need to do is be kind. And as humans, I'm sure many of us have experienced that we are having a bad day, everything is going wrong, boss is yelling at me, and suddenly a stranger comes and it's just being very kind, not doing anything else, listens to us, understands what we have to say. And just by that act of kindness, we feel happier, we feel a little lighter. It's the same thing. Just be kind, if not anything else. In Reiki, we have these concept of the 5 precepts, just like 5 vows, and every day we have to keep saying them. So one of them is, just for today, be kind. And that's actually a very powerful one. There's also another saying, I am not sure who it is, probably Dalai Lama, and he says that if you can do something that will bring benefit, do it. And if you cannot, at least do not cause harm. So I will say, make kindness your superpower today. बिल्कुल सही बात है। दयालु होना, काइंड होना ही जीवन की सबसे बड़ी बात है। अगर हम लोग रखते हैं तो बहुत सारी चीजें तो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। कहीं ना कहीं ये जैसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें और चीजों की बात करते हैं तो हम सोचते हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं सामने भी आती है और उसका इम्पैक्ट देखने के अंदर भी आता है। और जाहिर सी बात है, काइंड होने से हम जो नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं या फिर जो उनके साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं उससे तो बच ही जाते हैं। तो उससे भी अपने आप में बहुत बड़ी हेल्प यहाँ पर हो सकती है कि हम बहुत बड़ा कुछ सोचें, उससे बड़ी है कि हम उसको बुरा ना करें तो भी एक बड़ी मदद कर सकते हैं। चलिए इंद्राणी जी, बहुत वक्त की एक अपनी सीमा होती, बातें करते करते बड़ा समय ही पता ही नहीं चला। लेकिन जाते जाते फिर मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कोई एक ऐसी चीज जो लोगों को अगर अपने अच्छे एनिमल्स की एक अच्छी हेल्थ की, बेटर हेल्थ की अगर बात करते हैं, वो चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोई एक चीज जो आपकी नजर से उन्हें रेगुलर उनके साथ में करनी चाहिए, तो वो बताएं जिससे कि वो हैप्पी भी रहें, हेल्दी भी रहें। The second mantra, be present. And this I've learned from my cats. So sometimes, I go in, okay, I can do Reiki, I can do this, and I can do that. And my cat is saying, I'm not interested in all that. You keep all that to yourself. Just come and sit next to me. That's all he wants. Just come and sit next to me. And this is, I think, probably one of the largest lessons I've learned from him. The art of being present, not doing anything. So, just for a few minutes, leave your phones and everything aside, leave all your distractions aside, and just sit with your animal friend. That moment, that thing about just sharing that time together is probably the most precious memory that you will create, as for your animal as well as for yourself. So be present. सही बात, उनके साथ में रहना, उनका महसूस करवाना, यही सबसे बड़ी बात है। इंद्राणी जी, आपके साथ बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और आपकी बातें सुनते सुनते मुझे राबिया बसरी जी का वो शेर याद आया है कि मुझे नहीं लगता कहीं किसी तरह की कोई एक लाग लपेट कहते हैं जैसे हम लोग, जैसे कि मिलावट है कि आपकी इच्छाओं में कि नहीं मुझे कोई अप्रिशिएशन चाहिए, क्योंकि आप जिस एनिमल से बात करें, अक्सर ह्यूमन बीइंग का इंसान तो आपकी पीठ थपथपा देता है कि आपने उसके लिए अच्छा किया, बेहतर किया, लेकिन एक एनिमल है वो आपके साथ डिवोट हो सकता है, वो वैसे पीठ नहीं थपथपाएगा। उसके बावजूद आप ये जो काम कर रही हैं उसको देख के मुझे राबिया जी का, बसरी जी का वो शेर याद आ गया है कि खुशी तकसीम करती हूँ, दिल आजारी नहीं आती, मेरा मकसद है गमख्वारी, अदाकारी नहीं आती। कि दिखावा जो आपने अपने चेहरे से बिल्कुल निकाल के, अपने जीवन से, अपने चरित्र से निकाल के फेंक दिया है, उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। और आप इसी तरह से इन जो जीवों की जो सेवा करते रहें और उन्हें भी एक आम जिंदगी, आम हिस्सा जो बनने में मदद करते रहे। इन शुभकामनाओं के साथ कि आपका जो कार्य, अभी आपने जो प्लानिंग, जिन प्रोजेक्ट्स की जो बात की थी, वो भी बहुत जल्दी से जल्दी फलें फूलें, इसी के साथ में शुभकामनाएं और आभार और अभिनंदन के आपने हमारी तरफ से इस निमंत्रण को स्वीकार किया और अपना आज साक्षात्कार हमें जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इस वर्ष
वर्ल्ड ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड के लिए चुना गया। दर्शकों, इस तरह का कार्य जब किया जाता है, जब आप इंसानियत को, मानवता को सार्थक करने की बात करते हैं, तो कोई भी हो आपको नवाजने के लिए सामने आ जाता है। जरूरी है इंद्राणी दास जी की तरह निष्पक्ष होना, अपने आप के निस्वार्थ होना, कि उनका काम दया हो, प्रेम हो, क्योंकि जीवन को दो ही चीजें बचा सकती हैं, धरती पर पेड़ और दिलों में प्रेम। धरती पर पेड़ लगाइए और दिलों में प्रेम बनाइए और देखिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। खूबसूरत सी दुनिया की उम्मीद के अंदर आज के कार्यक्रम की आज्ञा चाहूंगा और फिर मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपको हमारे जो अगले अवार्ड के जो विनर हैं उनको लेकर, उनकी जीवन की भी हम लोग जानेंगे कैसे उन्होंने क्या किया। तब तक के लिए इंद्राणी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन कि आप अपने कार्यक्रम इसी तरह से लगी रही, यूं ही जीवों का उद्धार करती रही। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोले यहाँ पे ये चांस देने के लिए। थैंक यू सो मच। हम तो हमेशा तत्पर हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वो पॉजिटिविटी दूसरे लोगों तक भी स्प्रेड होती है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि अगर आपको देख के अगर एक आदमी भी इस तरह से प्रेरित होता है कि इंद्राणी दास जी इतना अच्छा काम कर रही हैं तो मुझे भी करना चाहिए, ये बेहतर इंसानियत का एक प्रारूप है, एक स्वरूप है, जिसके जरिए कि वो अच्छा दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सेवा, कि इसी तरह सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।